हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लैट एग्जाम 2027 के लिए आज के सेशन में लॉजिकल रीजनिंग से जो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दैट इज सिलोजिज्म। सो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम यहाँ पे चीज़ें कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दिस विल बी कवरिंग द एज वेल। फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। सो सिलोजिज्म में होता क्या है? फर्स्ट दे विल गिव यू द स्टेटमेंट्स एंड देन कंक्लूजन्स। सो एज पर द स्टेटमेंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है एंड कौन सा रॉन्ग है। होता कैसे है? हम स्टेटमेंट्स के थ्रू वी ड्रॉ वेन डायग्राम and this Venn diagram will help you to understand which conclusion is correct and which one is false. So if you want the basics of Venn diagram you can watch one more video of mine जहाँ पे मैंने Venn diagram के basics जो है वो cover किए हैं। ठीक है, so let's start. Statement 1 is all pens are book. All pens are book. So pens पूरे जो है it will come under book. And some of the books are bag. Some of the books are bags. एंड यहाँ पे बोला गया है नो बैग इज बॉक्स, मतलब कोई भी बैग बॉक्स के साथ लिंक्ड नहीं है। नो बैग इज बॉक्स. दिस इज हाउ वी ड्रॉ द वेन डायग्राम. नाउ लुकिंग एट द कंक्लूजन, सम पेन्स आर बैग्स, सम ऑफ द पेन्स आर बैग्स. ये तो गलत हो जाता है. क्यों? बिकॉज वी ओनली नो दैट सम बुक्स आर बैग. वी डोंट नो some of these books in which pens are also included that can be bag. So we are not 100% sure about this statement. और जहाँ पे आप 100% sure नहीं हो that is correct, that is wrong statement. Okay, simple analysis ऐसे ही करना है. जहाँ पे आपको statement जो है 100% correct दिख रहा है from the Venn diagram, that is correct. Now all pens are book, all the pens are book, all the pens are book. This is already given into the statement. So statement वाला अगर आपको conclusion में as it is दिख रहा है then that will be correct. Mark my words again, जो आपको statement में दिया है वही conclusion में दिया होगा तो correct ही रहता है. Okay, so इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. So only 2 follows. Option number B is correct answer. Moving ahead with next question. All roses are flower or the roses are flowers. Some of the flowers are red. Some of the flowers are red. Let it be these are these flowers जो red है, ये वाले. ओके, एंड ऑल रेड आर ब्यूटीफुल. ऑल रेड और ब्यूटीफुल को कैसे ड्रॉ करूंगी? पूरा रेड मैं ब्यूटीफुल में लेके जाऊंगी. ठीक है, दिस इज हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम. नाउ what are the conclusions given here? Some roses are beautiful. Some of the roses are beautiful. Roses being flower does not guarantee that they belong to red flowers. Okay, roses, some roses are beautiful. अगर सम रेड्स आर ब्यूटीफुल बोला जाता तो वो करेक्ट रहता. बट यहाँ पे हमें पता चलता है कि मैम वी आर लुकिंग रोजेस एज अ फ्लावर, सो रोजेस जो है ब्यूटीफुल होने चाहिए. आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे कनेक्शन वेन डायग्राम में कुछ बताया गया नहीं है. ठीक है, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. जहाँ पे भी आपको 100% श्योरिटी नहीं आ रही, सीधे रॉन्ग स्टेटमेंट कर देना है. सम रेड्स आर फ्लावर, सम ऑफ द रेड्स आर फ्लावर्स. नाउ हियर वी कैन क्लियरली सी red and flowers are overlapping. Red and flower is overlapping, so some of the reds are flower is a correct statement. Again only 2 follows here. Okay, moving ahead to next question. No cat is a dog. No cat, कोई भी कैट जो है वो डॉग नहीं है. एंड सम ऑफ द डॉग्स आर पेट, सम ऑफ द डॉग्स आर पेट्स एंड ऑल पेट्स आर फ्रेंडली. ऑल जितने भी पेट्स है वो क्या है? हमारे फ्रेंडली है. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम. ओके, नाउ लुकिंग एट द कंक्लूजन, सम फ्रेंडली आर डॉग्स, सम ऑफ द फ्रेंडलीज आर डॉग्स. ये स्टेटमेंट जो होता है मेरा यहाँ पे वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि डॉग्स एंड फ्रेंडली के अंदर हमें यहाँ पे ओवरलैप दिखाई दे रहा है. करेक्ट, यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है. सो दिस इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट अगर मैं देखूँ कंक्लूजन, नो कैट इज अ पेट. कोई भी कैट पेट नहीं है. अभी देखो, कैट एंड पेट, डॉग्स, cat and dogs simply here they are separate from each other, but pets can include the cat, but pets can include the cat. ऐसा नहीं है that यहाँ पे जितने भी pets है this can be cat, right? We don't know exactly. So इसीलिए ये statement जो है वो गलत हो जाता है. Again किसके बेसिस पे हमें गलत बोल रहे हैं? हमें पता होना चाहिए वेन डायग्राम के थ्रू जो आंसर आ रहा है वो 100% वेन डायग्राम के थ्रू ही आ रहा है. बट यहाँ पे नो कैट इज पेट, ये आंसर वेन डायग्राम के थ्रू नहीं आएगा. इसीलिए सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स.
some of the students, let's say this is students कुछ जो है, these are athlete, ATL, write it, and all the athletes are disciplined, these are disciplined, and no disciplined is lazy, no disciplined is lazy. This is how the Venn diagram looks like. Now sorry, ओके, कंक्लूजन में क्या दिया है, सम स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन, ये तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है स्टूडेंट्स एंड डिसिप्लिन के बीच में, ओवरलैप हो रहा है मतलब यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता है क्योंकि सम दिया है क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे सम स्टूडेंट्स आर नॉट लेजी पूछा गया है, ठीक है, दोज सेम स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन्ड पीपल आर नेवर लेजी, ओके, यहाँ पे डिसिप्लिन एंड स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्शन है, ठीक है, दोज सेम स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन, यहाँ पे इतने बंदे डिसिप्लिन्ड है, तो ये डिसिप्लिन और लेजी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाता है। वेन डायग्राम के थ्रू हमें समझना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स फॉलोज। मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, पूरे जितने भी कार्स है ऑल ऑफ देम आर व्हीकल्स and some of the vehicles are electrics, some of the vehicles are electrics and no electric is diesel, कोई भी electrical vehicle जो है it is not a diesel, so this is the statement given here. If you look at the conclusion, some cars are electric, some of the cars are electric, electric and car के बीच में आपको direct कोई connection दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम 100% sure नहीं है, इसलिए ये conclusion गलत हो जाता है। and no electric, no डीजल इज इलेक्ट्रिक, कोई भी डीजल इलेक्ट्रिक नहीं है, ये स्टेटमेंट एज इट इज कंक्लूजन का आपको जो है स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है। व्हेनेवर कंक्लूजन का स्टेटमेंट एज इट इज स्टेटमेंट्स में दिया है, स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एज इट इज ये स्टेटमेंट अगर यहाँ पे आ रहा है तो वो कंक्लूजन हमेशा सही ही होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज इज द करेक्ट आंसर। बिफोर मूविंग अहेड गाइस, For CLAT exam 2027 we have come up with a new live batch जिसकी नई बैच स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 29th of June 2026। इसके अंदर डेली लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी के रिकॉर्डेड सेशंस, ताकि आप आपके टाइम के हिसाब से इसको देख सके। यू विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड विद कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड 50+ मॉक टेस्ट और ऑल्सो प्रोवाइडेड हियर। ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस 2000+ MCQ क्वेश्चन बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। ओके, सो दिस टू फीचर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कोर्स। कोर्स फीस जो है इट इज 5000 रुपीज। यू सिंपली contact us on this given WhatsApp number for the enrollment of the course या फिर download the global online application for the enrollment. Next question is all doctors are graduates. Let's say this is doctor का circle and all of them are graduates, okay, and some of the graduates are writers and no writer is employed, sorry, unemployed, not employed, okay, unemployed. This is what the Venn diagram will look like. Now looking at the conclusion, some doctors are writers, some of the doctors are writers। आपको डॉक्टर और राइटर में यहाँ पे कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं, डॉक्टर ग्रेजुएट्स में कनेक्शन है एंड ग्रेजुएट्स एंड राइटर में कनेक्शन है, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ डॉक्टर एंड राइटर, इसीलिए ये कंक्लूजन पहला वाला गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, सम ग्रेजुएट्स आर नॉट अनएम्प्लॉयड, अगेन सम ऑफ द ग्रेजुएट्स यहाँ पे जो है वो राइटर है ये वाले, और हमें पता है यहाँ पे राइटर और अनएम्प्लॉयड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, एंड यही स्टेटमेंट में दिया है कि ग्रेजुएट्स are not unemployed, so this statement should be correct statement. Simply understand the connection first, okay, and then you can solve the question. So यहाँ पे the correct answer will be only second follows. Moving ahead with next question, some cups are glasses. Let's say this is cups, these are glasses, some of them are glasses, right, not all, so this is how the Venn diagram will look like. Some of them are glasses and all the glasses are utensils. पूरे glasses कहाँ पे जाएंगे, utensils में जाएंगे, and no utensil is plastic, there is no connection between utensil and plastic, okay, so this is how the Venn diagram will look like. This is the common area between glass and cup, okay, this is the common area. Now some cups are utensils, some of the cups are utensils, yes, it is correct statement. Why? Because यहाँ पे सीधे सीधे connection दिख रहा है cup and glass के बीच में, and glass, all of the glasses are utensils, so some of the utensils and cups have connection with them, so option number
कंक्लूजन नंबर 1 इज करेक्ट. नो ग्लास इज प्लास्टिक. ग्लास एंड प्लास्टिक के बीच में कनेक्शन बोला गया. लुक हियर, व्हाट वाज गिवन हियर, नो यूटेंसिल इज प्लास्टिक एंड ऑल ऑफ द यूटेंसिल्स के अंदर क्या आ रहा है, ग्लास आ रहा है. इट मीन्स ग्लास का भी और प्लास्टिक का भी देयर इज नो कनेक्शन, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी, both of the conclusions follow, is the correct answer. Moving ahead with next question, all birds are animals. All of the birds are animals and some of the animals are wild and no wild is domestic. कोई भी wild domestic नहीं है. So some of the birds are wild. Some of the birds are wild. What do you think should be the correct answer? We don't know here that there is a direct connection between birds and wild. We know there is connection between animals and wild, but no connection between bird and wild. Hence, this is a wrong statement. No domestic is wild. No domestic is wild. Again, same statement has been repeated here. No wild is domestic bolo ya no domestic is wild. It's one and the same, right? Hence, statement number second is correct. As I have told you, if exact statement आपको conclusion में मिल रहा है तो वो आपका correct statement हो जाता है. Moving ahead to next question, some of the teachers are singers and all of the singers are artists and some of the artists are dancer over here, right? So what is conclusion given here? Some teachers are artists, some of the teachers are artists. Is there any conclusion between is there any connection between teachers as in singer and artist? Yes, टीचर्स एंड सिंगर्स के साथ कनेक्शन है एंड पूरा सिंगर्स आर्टिस्ट के अंदर आ रहा है. इट मीन्स देयर इज कनेक्शन बिटवीन टीचर एंड आर्टिस्ट एज वेल, इसलिए कंक्लूजन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, सम ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स. सम ऑफ द डांसर्स आर सिंगर्स. अगेन वी डोंट नो द डायरेक्ट कनेक्शन. We know the direct connection between artist and dancer, okay, but we don't know the entire connection between singer and dancer over here. Hence this is the wrong statement. Hence option number A is correct answer. Okay, moving ahead to next question. This is the question for homework that I'm giving here. All mobiles are gadgets. Some gadgets are expensive and no expensive item is old. These are the two conclusions. You pin it down the answer in the comment section and tell me which of the following conclusions is correct or both of them are correct. Okay, so अगर आपको इस चीज में समझ नहीं आया है हाउ टू सॉल्व द स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, प्लीज go through the basics of the Venn diagram first and then you can understand syllogism as a topic. Okay, so this was end of the session. Thank you for joining the session. अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें and please do subscribe to the channel if you are new to it. Thank you for joining the session.